Welcome back, guys. अब हम करेंगे practical electricity question 2 paper 2 5054. Let's start. Question 2. A washing machine is working normally with both the water heater and motor switched on. The washing machine is connected to the main supply by a cable. The current in the live wire in the cable is 13 amperes. State the size of the current in the neutral wire in the cable and the earth wire in the cable. So basically, the machine is working normally. That means that the earth wire के अंदर जो करंट होगा वो भी इसके अंदर करंट होगा. अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ से थोड़ा सा रबड़ उतरा होता उसकी इंसुलेशन उतरा होता वायर का, फिर यहाँ से करंट escape करके इधर जा सकता है into the earth wire. But since that is not the case yet, it is working normally. So there will be no leakage of current. Since the machine is working normally, there will be no leakage of current. ठीक है ना? So what is happening is जो live wire में current होगा वही neutral wire में current होगा, and the earth wire as of right now will have no current. So it will be 13 amperes for the neutral wire and 0 amperes for the live wire. Let's continue. B. The insulation on the mains cable is now damaged as the washing machine vibrates. The live wire touches the metal casing. So now the wire has been damaged और उसके ऊपर जो insulation है वो उतर गई है. ठीक है ना? Insulation अब उतर गई है. Now what will happen is it will touch the metal casing, and when it touches the metal casing, it will become electrically charged. And when it becomes electrically charged, we can get shocked by it. ठीक है ना? Explain how the earth wire and the fuse together prevent any more damage. So जो earth wire है ना, that acts as a safety mechanism. ये एक wire होती है that is connected to the metal casing of the device, like ये जो washing machine है, it's सब devices के होता है. ठीक है ना? If the live wire जो है that accidentally touches the metal casing, that what happens is the electricity takes a shortcut through the earth wire instead into the casing. मतलब अगर यहाँ कट आया फॉर एग्जाम्पल तो इलेक्ट्रिसिटी सीधा इधर चली जाएगी बिकॉज इट इज अ लो रेजिस्टेंस वायर. इट विल गो हियर. समझ आ गई? सो इट एक्ट्स एज अ सेफ्टी मैकेनिज्म. आगे देखते हैं. अब हमने करना है फ्यूज का. तो फ्यूज बेसिकली ना आता है इधर कहीं. ठीक है ना? इधर लाइव वायर पे कहीं आ जाता है फ्यूज. एंड फ्यूज इज ब्लोन इफ द इलेक्ट्रिसिटी फ्लोइंग थ्रू इट इज टू हाई. ठीक है ना? द फ्यूज जो होता है एक और सेफ्टी मैकेनिज्म होता है. स्मॉल डिवाइस होता है इन द सर्किट दैट कैन ब्रेक द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इफ समथिंग गोज रॉन्ग. अगर बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है ड्यू टू द लाइव वायर टचिंग द मेटल केसिंग, जो फ्यूज होता है वो डिटेक्ट कर लेता है इसको और इसको डिटेक्ट करके ब्लो हो जाता है. एंड व्हेन इट ब्लोज इट आइसोलेट्स द वॉशिंग मशीन, सो देयर इज नो मोर पावर गोइंग इनसाइड द वॉशिंग मशीन. ठीक है ना? सो वी नो लॉन्गर गेट एनी डैमेज. सो लेट्स सी द आंसर. इसको हम यहां लिख लेते हैं. ठीक है ना? Resistance of the earth wire small or disconnects circuit, no electric shock or stops current. Current in live wire, earth wire briefly, fuse in live wire blows and melts. And when the fuse melts, it isolates the two components. So that's B1. So explain why is it that the live wire into which the fuse is connected, live wire is because अगर फॉर एग्जाम्पल लाइव वायर से कनेक्टेड है तो यहां से आएगी इलेक्ट्रिसिटी. इट विल गो हियर एंड फॉर एग्जाम्पल यहाँ एक फ्यूज को मतलब उसका वो इंसुलेशन उतरी हुई है तो सीधा अर्थ में चली जाएगी. अगर यहाँ लाइव वायर होगी ना इनटू द न्यूट्रल वायर, देन देयर विल बी नो चांस ऑफ द डैमेज्ड इंसुलेशन टू बी आइडेंटिफाइड. अगर लाइव वायर में होगी तो इट विल इजीली बी आइडेंटिफाइड बिकॉज इट विल बी द मैक्सिमम वोल्टेज वहां होगी और दैट विल इजीली बी आइडेंटिफाइड. ठीक है? The fuse acts like a guard, जो होता है ना guard, to stop too much electricity from flowing. अगर कुछ गलत हो जाता है like the insulation on the cable being damaged, the live wire touching the metal casing on the washing machine, जो fuse होता है that will break. This helps to prevent any accidents या आपको मतलब shock
शॉक से भी प्रिवेंट करता है, शॉक प्रिवेंशन भी होती है इसके अंदर, राइट। और ये सीधा इधर चला जाता है, इट आइसोलेट्स द सिस्टम and no more electricity will be going inside the washing machine, therefore we are safe. So that is going to be it for this video. I hope you enjoyed. Have a great day. Allah Hafiz.